I mean, it was the first theatrical release for me in Bengal. I've done Hindi films, but I've never had a proper film in Calcutta. And pressure ज़्यादा था because it's your mother tongue, right? तो performance अच्छी होनी चाहिए. सब देखने वाले कलकत्ते में सब देखने वाले. So I was like, oh shit, you know, this is extreme. But the first reaction when Pratim picked me up and he said in Bengali, मैं बंगाली में बताती हूँ आपको, ए बोईटा कोडबी ना की, which means ये film करेगी. And I said, you know what, I'll do it. I think my mom and dad mainly जो बहुत एकदम अच्छी से, पर वो देखे film, they went to Calcutta, they were in Calcutta, उन्होंने बड़े पर्दे पे film देखी और मुझे call आया. I was very nervous कि call करके क्या बोलने वाले. Then my mom and dad called me and said, you know, very proud of you, you did very well. बॉम्बे में रह के competition बहुत ज़्यादा और इतने अच्छे अच्छे actors हैं हर जगह that you don't always get the option to choose what you want to do till it's you've reached a place where you can. So I feel it's a constant struggle for actors, especially actors like us who are not from the industry, to find those right roles where people can see that you can perform, that you can act and you're better than the way you look. I think यहाँ पे actually problem क्या है कि it's a very stereotypical kind of a place. So it's very quick to put people in boxes. I mean, you know, it's very different industries. I think the Bangla film industry is very smaller still. It's not... I mean, it's getting there. I think बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उनके पास, म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छे हैं, क्रिएटिविटी के हिसाब से तो बंगाली लोग बहुत ही अच्छे हैं. So I feel extremely talented people over there, but I just feel like Bengali films haven't reached where Telugu films or the South industry has reached. I feel potential है, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं. In fact, चाल चित्रो मेरी फिल्म जो अभी बहुत अच्छी चल रही है वेस्ट बंगाल में, and that's why उन्होंने रिलीज़ किया नेशन वाइड, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है. आई थिंक ऐसी फिल्में बननी चाहिए चाल चित्रों जैसी, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे एक्टर्स लो, शांतनु है, टोटा है, रायमा है, सो द काइंड ऑफ पीपल यू कैन यू नो put all over the nation literally, and I think it's a great cast, it's a great story. Hi, I'm Priya Banerjee and you're watching me on Bollywood Hungama. So Chal Chitro is my first Bengali film and the first film in my mother tongue. So it's of course very special already, and direct जो किया है Pratim Gupta ने, he has done a fantastic job in directing the film. Also उनकी पहली जो, मैं हमेशा से उनकी फ़ैन रह चुकी हूँ. I'd seen उनकी पहली जो शो थी टूथ परी, मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी. I always wanted to work with him, and you know when he just called me out of nowhere and said, you know, ये फिल्म करनी है, बंगाली फिल्म है, I didn't think twice. मैंने कहा कि चलो, you know, I have to do this. And the character that I played, it was very different from the usual characters. This girl, Joba, so the character's name is Joba. And I'm so used to doing interviews in Bengali. Last few days in Calcutta, Bengali is coming out. So Joba is basically, it's Jaba in Hindi and Joba in Bengali. It means hibiscus flower. And she is somebody who is extremely proud of what she does. And she's actually a prostitute in North Bengal. So she is somebody, कोई भी Gen Z लड़की की जैसी है वो बहुत proud है, वो जो करती है, अपना काम को लेके बहुत खुश है. And she's not somebody who will get influenced by a man's power or would want to be under a man, you know. She's very independent. She's बिल्कुल आज की लड़की है, and she owns it, and I love that about her. Challenging, I think, would be for me, even though I'm Bengali, मैं बंगाली हूँ, लेकिन फिर भी वो जो बंगाली लोग जब बात करते हैं ना, उनका थोड़ा वो, there's a little bit of nuances, और मैं कैलकटा में बड़ी नहीं हुई हूँ, so I don't know those nuances, you know. तो मुझे मेरी मम्मी को, मेरी बुआ को बात करते हुए सुनना पड़ा एक दो बार अच्छे से, क्योंकि उनको एक twang आ जाता है जब वो लोग बात करते हैं ना, बंगाली लोग. So there's a weird twang in the way they speak. So I used to observe my mom speaking to my aunt and all of that just for those few days to understand कि कैसे बात करते. दो तीन बंगाली clippings देखी है मैंने. So I think for me to pick up, it wasn't a challenge, but it was extremely interesting because even though it's my own culture, but for the first time मैं एक अलग तरीके से अपने culture को देख रही थी, you know, as a study, so understand the people. So I definitely saw my mom, my little clips on YouTube, how Bengali people speak. वो पिकअप करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन you know, Pratim was amazing. The director on set, he said, just be yourself, and whatever you've heard growing up around your family, just speak like that, and I did that.
first theatrical release for me in Bengal. I've done Hindi films, but I've never had a proper film in Calcutta. And pressure ज़्यादा था because it's your mother tongue, right? तो performance अच्छी होनी चाहिए, सब देखने वाले कलकत्ते में सब देखने वाले. So I was like, oh shit, you know, this is extreme. But the first reaction when Pratim picked me up and he said in Bengali, मैं बंगाली में बताती हूँ आपको, ए बोईटा कोड भी ना की, which means ये film करेगी. And I said, you know what, I'll do it. And I wanted to work with him. And the first thing I said, मेरी पहली बंगाली film, it should be with a good filmmaker. And I'm glad I got to work with the team I did. I mean, as an actor, you keep exploring, I think, till you die, because there's so many characters to play. हर एज के साथ आपके कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, you know, like there's so many. अगर if I was in my early 20s, there'd be different kind of characters. Now I think the characters I'm able to play a lot more mature, because experience आ जाता है, right? एज के साथ emotions अलग होते हैं, relationships अलग होते हैं. So I think the characters now are more challenging than it was before. When you're in your early 20s, you know, I mean, of course nowadays there's so many versatility with characters, but ज़्यादा से ज़्यादा, you know, नाच गाना, cutesy moments, you know, you're young. But with age, I feel the options of playing different kinds of character really increases, and वो change मैं अभी देख रही हूँ, because I've been in India for almost 10 years now. But for me, as I grow, I'm seeing the options are getting bigger, like, you know, because you have more versatility in character. You can play somebody in your 40s, you can play somebody in the 30s, you can also play somebody in the 20s, you know. So in this age, I feel I don't want to limit myself. मुझे सब type, हर type के काम करने हैं, अच्छे अच्छे characters करने हैं, challenging the better. And yeah, I'm excited, because I feel like also the way filmmakers are making films and casting people also changing, which is great. Choosing projects, you don't always have the liberty to choose your projects, because of course you have to get to the level where you have the options of choosing 100 different projects. Also Bombay में रह के competition बहुत ज़्यादा, और इतने अच्छे अच्छे actors हैं हर जगह, that you don't always get the option to choose what you want to do till it's you've reached a place where you can. So I feel it's a constant struggle for actors, especially actors like us who are not from the industry, to find those right roles where people can see that you can perform, that you can act, and you're better than the way you look. I think यहाँ पे actually problem क्या है कि it's a very stereotypical kind of a place. So it's very quick to put people in boxes. So I think for me, it's been a constant struggle to always look for the right kind of roles that I want to play. So I'm hoping in the future. I mean, you know, it's very different industries. I think the Bangla film industry is very smaller still. It's not, I mean, it's getting there. I think बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं उनके पास, म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा है, and creativity के हिसाब से तो बंगाली लोग बहुत ही अच्छे हैं. So I feel extremely talented people over there, but I just feel like Bengali films haven't reached where Telugu films or the South industry has reached. I feel potential है, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं. In fact, चाल चित्रो मेरी फिल्म जो अभी बहुत अच्छी चल रही है वेस्ट बंगाल में, and that's why उन्होंने रिलीज़ किया nationwide, because response बहुत अच्छे आ रहे हैं. I think ऐसी फिल्में बननी चाहिए चाल चित्रो जैसी, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे एक्टर्स लो, शांतनु है, टोटा है, रायमा है, so the kind of people you can, you know, put all over the nation, literally. And I think it's a great cast, it's a great story, and the way Chalchitro has presented Bengali films, I think it's not happened in a while. So fingers crossed कि अच्छी फिल्म चलती रहे और लोग हमारी फिल्म देखते रहे, और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनती रहे कलकत्ता में, ताकि बंगाली फिल्में भी तेलुगु फिल्में जैसी 2000 करोड़ बनाए. Jobba especially was most of it the director's vision, because it's a very tricky character. Jobba is a character जो बहुत ही आसानी से, it can look sleazy and weird, but she's not. She's a strong character. She's extremely strong because she is proud of herself, extremely proud of what she does. और जब एक scene है फिल्म में, जब वो जिस बंदे से वो प्यार करती है, the police guy, one of the leads, he comes, इंद्रजीत का जो कैरेक्टर है, वो आके बोलता है कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे साथ क्यों नहीं सेटल हो जाती. फिर वो पूछती है कि फिर मेरे काम का क्या है, तुम तो इंस्पेक्टर और अच्छा पैसा कमा लेते हो, मेरे काम का क्या. And I think that attitude she carries throughout the film, it's brilliant. And I think that attitude is something that's also very inspiring for most of the women out there today. And it's needed, yeah. She's a strong character. And when Pratim told me that this is a character, would you be interested? When he told me about the character, I said, I'm on. I relate to her. So let's do this.
प्रोफेशन अलग है, बाकी सब कुछ बहुत ही सेम है. अपना कैरेक्टर सिमिलैरिटी है बिकॉज वी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, वी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी डू, वी आर नॉट अफ्रेड और अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, वी आर वल्नरेबल, जो वो है. तो वो सब बहुत सारी सिमिलैरिटीज है. अदर देन दैट शी इज़ वर्किंग इन अ प्लेस वेयर अनफॉर्चुनेटली इस देश में लड़कियों को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है वहाँ पे टू नो देयर स्टोरीज. Other than that, I feel as individuals, as human beings, we have quite a few similarities, for sure. My mom and dad, I think my dad especially, वो हमेशा सिर्फ गलतियाँ ढूंढते हैं, not in a bad way, which is great because you need that positive criticism because otherwise how will you improve, right? तो आई थिंक माई मॉम एंड डैड मेनली जो बहुत एकदम अच्छी से, पर वो देखे फिल्म, दे वेंट टू कैलकाटा, दे वर इन कैलकाटा, उन्होंने बड़े पर्दे पे फिल्म देखी और मुझे कॉल आया. आई वाज वेरी नर्वस कि कॉल करके क्या बोलने वाले. देन माई मॉम एंड डैड कॉल मी एंड सेड वेरी प्राउड ऑफ यू, यू डिड वेरी वेल. And I felt so good. I think that is the biggest compliment when your parents say that you did well, you've done good, and it's a tricky character to play. और जब अपनी मम्मी पापा बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया और बड़े पर्दे पे देख के ऐसा बोलते हैं तो it's a fantastic feeling. अब पहले तो ये फिल्म देख लीजिए, अभी बॉम्बे में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हैदराबाद में, हर जगह इन द थिएटर्स. एंड प्लीज़ चेक इट आउट, गो वॉच चाल चित्रो. बहुत ही अच्छी फिल्म है. एंड जेन्युइनली इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे एक्टर्स हैं, मैं हूँ. इट्स अ गुड स्टोरी एंड इट्स अ सेंसिटिव स्टोरी. इट्स अ थ्रिलर. इट्स द जॉनर आई थिंक मोस्ट पीपल लाइक. एंड आफ्टर द काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट हैपेंड इन कैलकाटा, आई थिंक ये जो फिल्म है, इट्स approached and made in a very sensitive way. So I feel like this film should be watched by everybody and loved by everybody. उसके बाद मेरी एक और फिल्म है हिंदी में जो actually परमव्रता के साथ है. I'm sure you guys have seen, he's done some fantastic work in Pari and other films. तो उनके साथ एक मेरी फिल्म आ रही है जहाँ मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार कर रही हूँ. अगेन वेरी डिफरेंट. देन देयर इज़ अनदर डार्क कॉमेडी विच आई हैव एक्चुअली शॉट, जो गोवा इफ़ी में स्क्रीनिंग हुई थी, जिसकी कैंडी एंड पिज्जा गर्ल, सो वो भी आने वाली है. सो आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स लाइंड अप, सो फिंगर्स क्रॉस्ड यू गाइस विल सी सम ऑफ मी नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर. আমার বই চালচিত্র বম্বে, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর সব জায়গায় রিলিজ হয়ে গেছে, পুরো ইন্ডিয়াতে রিলিজ হয়ে গেছে. যান দেখুন, ভালোবাসা দিন, খুবই ভালো বই, আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন. অ্যান্ড just show us a lot of love. চালচিত্র দেখুন. It's on our social media, you'll see where all release हो रही है film. Please go watch it, show us some love and yes, go watch it. Hi, I'm Priya Banerjee and you're watching me on Bollywood Hungama.